हेलो फ्रेंड्स, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है. So many of you will be very happy, those who have cleared this exam. And some of our friends who have not cleared this exam must be really disheartened. Truly so, after working so hard and slogging for so long, studying, raising high hopes of yours and on your parents, when you don't succeed, definitely it is heartbreaking. बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है. कोई आपको कितना भी कहे कि दुख मत करना, इसके बारे में मत सोचना, आगे बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, हो सकता है ये अच्छे के लिए हुआ हो ना, इसमें भी कोई भलाई छुपी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अंदर से पता होता है कि समथिंग इज नॉट राइट. फेल हुए हैं और बड़ा दुख होता है इसमें, और वो जो दुख है वो किसी को कह भी नहीं सकते कि कैसा दुख है. बार बार याद आएगा कि अरे यार अगर क्लियर हो जाता तो, और जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनके लिए तो बहुत बहुत मुश्किल का समय है. I identify this because I know a lot of people who have failed, and then after failing there are two ways. One way is you go into depression and another way is you do something good with your life. कुछ अच्छा करते हो आप अपनी लाइफ के अंदर तो आपको कुछ अच्छा करने का मौका मिलता भी है, लेकिन इस चीज के पीछे पड़े रहेंगे तो बहुत ज्यादा परेशानी में फंस जाएंगे. तो अब उन बच्चों के लिए जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, मैं सिर्फ और सिर्फ दो चार बातें कह सकती हूँ. मोटिवेशन करने की कोशिश करना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कुछ भी कह लो, फेलियर इज अ फेलियर. मेहनत गई है पानी में अभी के लिए, तो दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा उसी तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी. लेकिन जो गलतियां हुई हैं, वट एवर मिस्टेक्स यू हैव डन इन योर पास्ट examination, you have to correct it and move forward. और इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कह सकती हूँ कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही. मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही. गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं. यानी वो लोग गुमराह हैं जो घर से निकले नहीं, जिन्होंने कभी यूपीएससी का एग्जाम ही नहीं दिया. वो क्या यूपीएससी में फेल होंगे, क्या पास होंगे, है ना. हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, अगला एग्जाम देंगे. और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ अटेम्प्ट तक क्लियर नहीं कर पाए, और फिर जाके कहीं उनका एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, और जब क्लियर हुआ तो बन गए ऑफिसर. अब एक बार बन गए तो बन गए. अब ये हार, प्रीलिम्स का ना क्लियर होना, ये सब याद भी नहीं रहता. तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कंटिन्यू, तो जी बिल्कुल हिम्मत से लगे रहिएगा. डोंट फील बैड. बुरा लगेगा, दुख भी होगा, लेकिन ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम. होना भी चाहिए थोड़ा दुख. अगर फेलियर होने के बाद आपको दुख नहीं हो रहा तो गड़बड़ है ना. दुख ओके, लेकिन उसको सही से चैनलाइज करना है और मेहनत करके अपनी प्रॉब्लम्स को करेक्ट करके, अपनी कमियों को दूर करके. ये तो हुई उन बच्चों की बात जो इस बार क्लियर नहीं कर पाए. नाउ कमिंग टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स. दिस ईयर prelims was rather difficult in the sense because of the sudden raising of the level of CSAT. Lot of students could not actually clear this CSAT even when they were very good in paper 1. And sometimes you must have heard that line, there is an opportunity in every tragedy. Definitely there is this opportunity for these candidates now who have got selected, because अब जो ये एग्जाम है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है. इस बार जिस भी व्यक्ति ने अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, तो वो बच्चे का एग्जामिनेशन आसानी से क्लियर हो जाएगा और अच्छी रैंक में आ जाएगी. क्योंकि आप देख रहे हैं इस बार का कंपटीशन कैसे है. इस बार के अंदर प्रीलिम्स के अंदर क्योंकि सीसैट इतना अच्छा था, तो उन इंजीनियर्स ने या उन मैथमेटिशियंस ने या उन लोगों ने जिनका सीसैट बहुत अच्छा था, उन लोगों ने क्लियर किया एग्जाम. And the people who were good in humanities or the writing skills or the reading skills, they could not clear because of this. ये जो हमारा पेपर 1 है उसको कई बार काउंट ही नहीं कर पाए, यूपीएससी काउंट ही नहीं कर पाया. तो अब जब ये आपका ऐसे वाले कैंडिडेट्स से आपका सामना है जो मेंस के अंदर हैं, जिनके शायद क्योंकि सीसैट हम लोग ऐसा मानते हैं कि भाई दोनों में से एक चीज़ कई बार अक्सर ज़्यादा होती है. बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर दोनों ह्यूमैनिटीज़ और मैथ्स दोनों बहुत अच्छी हों. तो अगर हम उस तरीके से देखें तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो इस बार मेंस दे रहे हैं. वर्क ऑन योर स्किल्स, वर्क ऑन इट,
अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करें, और एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए यही 3 महीने हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे वो चकदे वाली लाइन बड़ी अच्छी लगती है, जब वो कहते हैं ना कि तुम्हारे 70 मिनट हैं, जा अपनी ज़िंदगी जी लो, अपना ऐसा गेम खेलो कि तुम्हें याद रहे। तो उसी तरीके से ये जो 3 महीने हैं, ऐसी पढ़ाई करो कि तुम्हें हमेशा याद रहे कि वाह क्या पढ़ाई करी थी, एकदम जी तोड़ मेहनत करी थी। तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हमारे कुछ फ्रेंड्स से कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो लेट अस सी। क्वेश्चन है, नमस्ते मैम, these are my this was my third prelims, मैं और but I could not clear this prelims stage, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है तो 2 ही रास्ते हैं, या तो तैयारी छोड़ना या फिर दोबारा से तैयारी करना। तो कोई ना कोई एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा, और जितनी जल्दी हम चुन लेंगे उतना अच्छा हमारे लिए रहेगा। डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, डिसाइड यू वांट टू गिव दिस एग्जाम, यू वांट टू कंटिन्यू, start preparing ASAP. Don't let this sadness of failing or sadness of not clearing prelims bog you down. बहुत लंबे समय तक इसको ढोते रहेंगे ना, तो तैयारी आगे की कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी से तुरंत छोड़िए और अपना आगे बढ़िए। स्टार्ट कहाँ से करें? न्यू लर्नर के लिए कभी हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, लेकिन दे शुड स्टार्ट विद न्यूज़पेपर एंड NCERTs। हाँ, किस्मत मौका दे रही है पर मेहनत चौंका देती है। सही बात है, किस्मत तो हमेशा मौका देती है, लेकिन अगर हम मेहनत करें तभी तो वो ताले की चाबी खुलेगी, वरना कैसे होगा। ओके, क्रिकेट फिक्शन, यू क्लियर्ड प्रीलिम्स, वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस। सो यू हैव क्लियर्ड दिस प्रीलिम्स, definitely treat it as a very good what do you say, luck. You now should start preparing for your mains. मैम डेमो कब से स्टार्ट होगा? विच डेमो फॉर GS? I'll rather say free classes will start from 15 to 25 of June, and the reason is these are not demos, and these are more of a free classes, because here we will also share full strategy of preparing a subject and how you should approach, and then of course we will do some topics for you. So a demo is a little, I don't know, I don't like that word. Now मैम EPFO एग्ज़ाम के लिए टिप्स प्लीज़। किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो टिप्स हैं वो हमारे ऑफ कोर्स मेहनत करने के बाद ही काम आते हैं। तो आई होप आपने अच्छे से मेहनत करी होगी, लेकिन अगर टिप्स देनी ही हो तो शांत और ठंडे दिमाग से जाके सोचें, पहले उन क्वेश्चंस को करें जो आपको आते हैं, तब आगे बढ़ें। वेद प्रकाश पांडे, मैम इज एग्रीकल्चर द बेस्ट ऑप्शनल? बेस्ट ऑप्शनल कुछ नहीं होता, हर व्यक्ति के लिए एक अलग बेस्ट ऑप्शनल होता है। मेरे लिए शायद फिलॉसफी रहा है, किसी और के लिए कोई भी और सब्जेक्ट रहा होगा, है ना। तो इसीलिए देयर इज नो बेस्ट सब्जेक्ट, यू हैव टू सी व्हाट इंटरेस्ट्स यू, आपको क्या अच्छा लगता है। तो मेरा मानना है कि 5-6 अच्छे ऑप्शनल्स को चुन लें, उनके बारे में स्टडी करें, हल्का हल्का पढ़ें, एक बार देखें कि किस तरीके के पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, किस तरीके का एग्जाम आता है, देन डिसाइड। मैम साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी में कंफ्यूज हैं, दोनों में मेरा इंटरेस्ट है, कहाँ से लें? दोनों ही नहीं है मेरे पास, ना साइकोलॉजी है ना सोशियोलॉजी है, और दोनों ही मैंने पढ़े नहीं है। सो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू, so definitely you can choose any of them, whatever you like better. दिलेर हुसैन, मैम 2025 में एग्ज़ाम देना है, स्ट्रैटेजी बताएं। 2025 में अभी आप क्या कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं है, तो मैं स्ट्रैटेजी कैसे बताऊं? पहले मुझे पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और बैकग्राउंड की ज़रूरत है किसी भी स्ट्रैटेजी को देने के लिए। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम कर रहे हैं तो स्टार्ट विद बेसिक्स एंड देन मूव फॉरवर्ड। कीप चैट इन इंग्लिश, ओके मैम। कुछ इंटरव्यू टिप्स, क्वेश्चन हिंदी में है, इंग्लिश में कैसे जवाब दिया जाए? इंटरव्यू वी विल प्रिपेयर सम टाइम लेटर, ओके। इज देयर? मैम मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वर्क हार्ड, फाइंड where the problem lies, and then we can move forward. Sometimes it takes more than once to
clear something, but it doesn't mean that you cannot. I know there will be a lot of pressure from your parents, relatives and other people. Oh, second also prelims not cleared. I don't think you are made for UPSC, or you are not the officer staff. Definitely such things dishearten us, but I'll still say, don't judge yourself only with this exam. You will clear it. Just find the right person, right path, right right way to study, and right time. Sit, study. You will clear this exam. It's not some rocket science. Mains, ma'am, PG, ma'am, mains भी क्या tough होगी? Definitely. Exam is made to be tough. Why do you want an easy exam? If there is easy exam, everybody will pass it. What's special about you then? Why you should be selected as an officer? Definitely exam will be difficult, and be ready for any new change or new kind of surprise. You have to prepare for all the surprises UPSC throws. Ma'am, geography optional. Geography has not been my optional. I have heard that it's a good technical optional, though a little lengthy, but I have heard it's a good optional. Yes, IFS Sudhanshu, Tathastu provides a scholarship test, entrance test. So we don't want anybody and everybody to come for offline classes. Why? Because there needs to be a particular entrance exam for offline batches. That's very necessary, so that the momentum and the everything can be maintained. So there is a entrance exam on 25th, and it is a scholarship based exam. People who grow, who score above a particular threshold, they will be provided with some scholarships. मैम APFC स्टेट PSC से अच्छा है क्या? Both are different. State PSC is a different examination and different job profile, and APFC is a different job profile. I think you are in class SN Gaming. मैम मैं अभी क्लास 11th में हूँ, कैसे तैयारी करूँ? 11th में है, सबसे पहले तो 12th के लिए तैयारी करें, सिर्फ NCERTs पे फोकस करें, न्यूज़पेपर पढ़े, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करें. In 10th कौन सा सब्जेक्ट लें? So I am Anshu. You can take subject that interests you. So even if you take humanities, you can give civil services. Even if you take non-medical or medical, you can take you can do civil services by doing some graduation. I rather say choose something which has a career path involved, because UPSC is a very unpredictable examination. Unpredictable. You always see success stories in in media, but nobody actually highlights that out of so many students, a lot of students never get to clear this examination. So always have a plan B as a pillar. So I'm not saying you cannot clear. Yes, you can, and you will. But what's the harm in keeping a plan? Some security at the back, like an insurance. So take something which has insurance value. PG, ma'am, right strategy for mains. It seems that it will also be a difficult one. Right strategy will of course take a lot of time here, but coming to the part that it will be difficult, yes. Actually, the difficulty and ease of an examination actually depends on your preparation and your expectation level. Why did you expect that prelims will be easy? It's an examination of such great posts and everything, so it is bound to be difficult, and you should be ready with the change and the difficulty part. Similarly, mains is again, we should be ready with the difficulty part. We don't know what kind of questions UPSC will ask this time. Maybe they will not ask 10 or 15 markers. They will move on to give some 5 markers and some 20 markers. We don't know. We should be ready with our skills. Ma'am, I have done engineering. How can I start for UPSC 2024? I am from Kashmir. So life isn't fair. Yes, life isn't fair. So it is like you can start by covering the basics and moving along
taking, practice, MCQs and answer writing practice, I think that will do the trick. रिया कुमारी, बट सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है. अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, टेक हेल्प. लॉट ऑफ हेल्प इज अवेलेबल ऑनलाइन, ऑफलाइन, एंड टेक हेल्प. Any of the person who has cleared this examination, you know that person, go and ask help. And trust me, if you ask for help, I have generally found that nobody denies. If they know it, they give. Geography optional क्या hard है rather than any other subject? A optional teacher with geography can tell you better, है ना? I think Vineet Thaplu sir took a session recently, so he will be able to better gauge geography optional because he's the expert. I haven't read it as an optional. IFS Sudhanshu ma'am, philosophy interested optional subject choice syllabus. थोड़ा सेंटेंस नहीं बना सुधांशु, लेकिन हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट है फिलोसफी. मेरा फिलोसफी ऑप्शनल, आई टीच फिलोसफी, सो डेफिनेटली आई विल बी अ लिटिल बायस्ड, but yes, you should evaluate for your own self. Do you like philosophy? If you like that, then it's a very good interesting subject, definitely. Sid ma'am, all my attempts are over. I have written 3 mains and given 1 interview. Oh, what to do now? I wanted to enter politics, new course of action. This is a really sad reality, or this is the, what do you say, the ugly part of UPSC, where sometimes after learning so much and achieving so much, it's not clear, it's not easy to clear prelims, and then after that it's not easy to clear mains. So a person who has given interviews, definitely talented one, and now somehow the market is not very welcoming towards these talented lot. That is why I started this course of MA administration and all this, so as to correct this anomaly. Definitely, Sid, there is this problem. You can enter into politics, but again, that's a very uncertain and not just uncertain, it's a very cumbersome field. You have to have a certain background, and I tell you, it's always good to have first economic independence, and for that you either take up some job. You can work, if you have this good knowledge of UPSC, you can act as a content writer, maybe teacher, and if not, if you want to move out of UPSC, then you can apply at various organizations, or you can do a bridge course. Bridge course means if you haven't done anything in these gap years or 4-5 years that you gave attempt, then definitely your profile lacks a continuity, an academic continuity. So you can join a course, maybe a year of a diploma or something, and in this time build your profile, build your skills, and then you can apply in the normal market. Normal market in the sense, some organizations where your skills can be utilized. Kuldeep Kaur, ma'am, I am preparing for state PCS. How can I prepare for UPSC 2024 simultaneously? I've heard that the syllabus have been aligned a lot. So definitely, while you are preparing for UPSC, you can simultaneously prepare for UPPCS, but the difficulty level and certain questions will be different. So you have to make a time. So what you can do, you can devote maximum time to UPPCS, and then at the same time keep 2 or 3 hours specifically for UPSC preparation. Adityanath, मैम ग्रेजुएशन के बाद आईएएस तैयारी होती है? हाँ, ग्रेजुएशन के बाद आईएएस का एग्ज़ाम दिया जाता है. तैयारी तो पहले भी हो सकती है, तैयारी तो ग्रेजुएशन के दौरान भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन बेसिक एलिजिबिलिटी है एग्ज़ाम देने के लिए. सिविल पंडित, मैम मेरा सेकेंड अटेम्प्ट यूपीएससी का बट पीटी नहीं हुआ, मैम क्या करूँ मैं? दोबारा प्रिपेयर कीजिए, यानी कि कुछ गलतियाँ रह गई हैं. एग्ज़ाम भी थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं. सीसेट ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है बच्चों के लिए, तो डेफिनेटली थोड़ा और प्रिपेयर करना पड़ेगा, थोड़ा और तैयार रहना पड़ेगा. दोबारा तैयारी कीजिए, लेकिन अगर आप किसी तरीके से जल्दी में हैं तो आप कोई जॉब ज्वाइन करके भी साथ साथ तैयारी कर सकते हैं. सिड, मैम ऑल माई अटेम्प्ट्स आर ओवर. आई हैड फिलोसफी ऑप्शनल. आई गेव 3 मेन्स and 1 इंटरव्यू. व्हाट टू डू नाउ? Philosophy is such a good optional. Why didn't you clear it? What was your score in GS and philosophy? Okay. So apart from that,
I told you, like, you can apply for some content writing positions and try to have some, utilize your understand. So a lot of people enter into media. A lot of, you might not be knowing it, because the UPSC student is so good in writing answers. They are so good in, communicating because of that interview practice. So many of the UPSC candidates who could not qualify mains examination or civil services examination in all their attempts, they sometimes go to media and do really well. So you can think on those lines also. Cut off, नहीं पता. मैं शुभम कुमार मैम, क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी रहती है पर आंसर में प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है. मैंने एक्सप्रेशन में बहुत प्रॉब्लम, मेरे मीन्स एक्सप्रेशन में बहुत. आई एम गोइंग टू टेक अ क्लास टुडे इटसेल्फ, मे बी इट विल बी पोस्टेड टुमारो or a day after, or rather it's a live streaming. So I'll ask, so it is like we will discuss what are the major tenets of answer writing. Very necessary, because answer writing is a skill. Presentation is, presentation is very important. Until and unless you present your facts well, it doesn't, have that value. So I'll be teaching some tips, trips, and how to utilize your talent in enhancing marks from whatever information you have. So I'll take some classes for mains, and which are, mains enhancement answer writing practice types. आई एम अंशु. क्या मैम तथास्तु ICS के द्वारा UPSC एग्जाम की तैयारी फ्री में है? Yes, if you qualify the scholarship test. So scholarship, again, it's an institute. If you have that merit, you can. Vishal Singh, ma'am, I have started preparing very late in my life. I gave 3 attempts, cleared prelims twice, but could not make it in mains. Now I turned 30 and I've quit my job as well. It becomes depressing at times. Definitely, Vishal, you have to have a plan B with UPSC. Whatever your motivation is, you should always have a plan B. Now that you have quit your job, you have already taken a lot of risk. I will say, when you have taken such a risk, don't think too much about, others and your failures. Keep consistent. At the same time, either join a course which can help you continue your academics, or do some part-time job or something. So don't have those gap years. They are very difficult to explain later on. Do something along with preparing UPSC. Shubham Kushwaha, yes, we would like to start in Hindi medium, but right now we are not able to. रिया कुमारी, प्लीज हेल्प मी मैम, प्लीज सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पा रही हूँ. विच सब्जेक्ट इज पोजिंग अ प्रॉब्लम टू यू? Ma'am, which best optional for computer engineering students? There are a lot of optionals. Some technical people who are really good in maths take up maths, and others generally go for humanities subjects like PSIR, philosophy, sociology, and what are the anthropology. So these are the common subjects which anyone can read from scratch, and they can write good answers. So you can choose whatever optional you feel like is good for you. यदुवंशी मैम, 2024 प्री की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सही है? Again, you will have to choose your optional according to your competence and interest, whether you like it or not, whether you are competent to understand it and write it and express it. That's very important. Sameer Jarwal, मैम UPSC के लिए कितने साल की प्रिपरेशन चाहिए? At least 1 year. And some people take a lot of time also. Why I am single, ma'am? Confused regarding selection of optional, whether to take philosophy or to go with anthropology. I love both. So if you are asking this question to a teacher of philosophy, what should I answer? It's that definitely both optionals are good. You will have to decide on your own.
and there are certain decisions in life which nobody else can take it for you. You have to choose. I say you can do some research, in the sense you can see some syllabus regarding it. You can watch. I'm also going to give a lecture on YouTube regarding one of the philosophers, so you can watch that. And apart from that, you can watch evaluate these past year questions, see whatever is which optional you are liking better, then you can study that. SN गेमिंग, मैम कॉलेज में कॉमर्स सब्जेक्ट से पास आउट होने के बाद क्या यूपीएससी दे सकते हो? बिल्कुल, यू कैन गिव यूपीएससी आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम कॉमर्स. सनी लर्न रिसर्च अकेडमी, मैम मेरा पीटी हो गया है. वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस. नाउ कीप राइटिंग एंड clear. This is only the one stage, don't forget that. Ma'am, I think UPSC should have given maximum 3 times, but with full preparation, because it wastes other opportunities. After all, UPSC is not everything, so failed students don't lose heart. Oh yes, so whatever servants of Prophet Muhammad is saying is symbolically right, that yes, UPSC is not everything. We have other avenues, so choose wisely. मैम प्लीज़ बता दीजिए कि हमने ऑप्शनल में क्या लेना चाहिए. महादेव की लाडली, I cannot tell you which optional to take. Lot of optionals. You will have to decide according to your interest and competence. I teach philosophy, so definitely I can tell you about philosophy, that it is a good optional in the sense that it interests a lot of ideas about God, soul, heaven, religion, science. All of these very interesting ideas are discussed in philosophy. So we read Indian philosophy, all the Indian philosophical thoughts, Western philosophical thoughts, and all of these. So it's a very interesting subject, which according to me is interesting, but you will have to find out your interest. So maybe I like chocolate ice cream, but you like vanilla. So we can have different opinions and the interests. So you will have to see, if you have interest in philosophy, definitely you can take it, or any other optional. So maybe you are more interested in PSIR or sociology or anthropology or maths, or whatever. So many optionals to choose from. राहुल कुमार द्विवेदी, मैम CSET के लिए अप्रोच क्या हो? लर्निंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, परफॉर्मिंग. एक ही तरीका है CSET को करने का. learn the concepts, work hard, then practice practice practice, don't stop. So if you know the formula, it doesn't mean that you will be able to solve it. You have to practice the type of questions, only then it makes you can clear this exam now. मेंस में, अंश मौर्य, मेंस में बेस्ट प्रैक्टिस कैसे होगी? बेस्ट प्रैक्टिस, like you are seeing that मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी? We are also I am also trying to make some videos on answer writing for you people, for the benefit of mains student. Apart from that, there are certain customized and more specified enhancement programs, like Tathastu is also launching one, and a lot of people are launching. So that can also be a good help to some students who really want to start from the scratch and move upwards. But if you have certain knowledge, then quality enhancement programs are better. Quality enhancement where content is enriched. Here, tech lovers, ma'am, my graduation on science stream, then how can I start UPSC? After graduation, you can start with UPSC. There is no requirement of any particular subject in graduation. Any graduation works. Shubham Kumar, ma'am, answer writing के expression में problem बहुत होती है. Yes, it's because we think something else, we want to write something else, and the things that we put on paper are sometimes really different. So we have to make that sync. The thought process, in the clarity in thought process, the speed in writing that thought process, and expression of that thought process. So that is where the practice is important. Expression is very important. Kavinder Singh, ma'am, I have post-graduated in chemistry. It is option B, but option history, correct or not?
Again, if you are really interested in history, you can take history as an optional. Manoj Mishra, ma'am, does UPSC allow to prepare aspirants systematically now between easy and tough? Is UPSC asking questions really out of the syllabus? CSAT is in fact violative to syllabus mentioned in quants. We cannot say it is, unfair. Even if it was difficult for everybody. You should not complain too much. Yes, UPSC wants the best out of people who can work in crisis, who can work in pressure, and who can work if scenario changes. World is changing really fast. बहुत तेजी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो जो सिविल सर्वेंट है या जो ऑफिसर है उसको रेडी रहना पड़ेगा उस चेंज के साथ अडेप्ट करने के लिए, उस चेंज के दौरान घबराए बिना परफॉर्म करने के लिए और उतना तैयार रहने के लिए. तो इसको भी आप एक तरीके की तैयारी समझें. सो आई डोंट थिंक that there is some problem with UPSC examination. I think that we need to prepare better. I think that's done, and the time is up also. Yes, does medium, Amit Goswal, does medium matter in our selection? No. Definitely a lot of material is available in English language. That is why there is a little edge for English language students in the availability of content matters, but it doesn't matter. Choose the option, choose the medium in which you can express the best. सत्य गुप्ता, मैम ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया, जीएस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? 2027 में अटेम्प्ट, 2027 you have long time. So for GS, then keep updating your current affairs and read the static books, basic books. I think that's it. Thank you all of you, and people who are going to write mains, be consistent, keep writing. I will come up with more answer writing sessions, and we will continue with this. Okay, thank you so much. Bye bye, best wishes.